Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Paramahams Prajikacharya Shtutarashata Shri Shrimada Bhai Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. All glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees. Hare Krishna. Good morning. Good morning. So, you are going to translate, right? Okay, very good, very nice. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are studying the science of God. It is the title of 7th canto of Srimad Bhagavatam. हम लोग सिद्ध पुरुष का आचरण इस अध्याय से पाठ करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 13वां. Chapter 13, the behavior of a perfect person, text number 26. 7वां स्कंद 13वां अध्याय सिद्ध पुरुष का आचरण श्लोक संख्या 26. Tatrapi dampatinam cha. Tatrapi dampatinam cha. Sukhaya puni. Sukhaya nyapanutayem. Sukhaya nyapanutayem. Karmani kurvatam drishtva. Karmani kurvatam drishtva. Nivritosmi viparyayam. Nivritosmi viparyayam. Tatrapidam patinam cha. Sukhaya panutaye. Karmani kurvatam drishtva. Nivritosmi viparyayam. Tatrapidam patinam cha. Sukhaya panutaye. Karmani kurvatam drishtva. Nivritosmi viparyayam. Anyone else? Anyone else? Tatrapidam patinam cha. Sukhaya panutaye. Karmani kurvatam drishtva. Nivritosmi viparyayam. तत्रापि दंपतीनां च सुखाय अन्यमुक्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्. Tatrapi dampatinam cha. Sukhaya panutaye. Karmani kurvatam drishtva. Matajis. Tatrapi dampatinam cha. Sukhaya panutaye. Karmani kurvatam drishtva.
One more, Mataji. Okay, word by word translation. Tatra. I will be reading Sanskrit. You read Hindi translation. Yeah. Tatra. Api. Dampatinam. विवाह द्वारा जुड़े पुरुषों तथा स्त्रियों के Cha. तथा Sukhaya. आनंद के लिए विशेषतया विषयी जीवन के आनंद हेतु Anya apanutaye. कंजूसी से बचने के लिए Karmani. सकाम कर्मों को Kurvatam. सदैव करते हुए Drishtva. देखकर Nivrittaha asmi. ऐसे कार्यों से अब मैं निवृत्त हूँ Viparyayam. The opposite. Sorry. Viparyayam. उल्टा Okay. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON and BBT. Srila Prabhupada ki. In this human form of life, men and women unite for the sensual pleasure of sex, but by actual experience we have observed that none of them are happy. Therefore, seeing the contrary results, I have stopped taking part in materialistic activities. अनुवाद इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का संयोग मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। Purport. I will read the whole purport, then you read the whole translation. Yeah? Like this. Is it okay? Yes, no, maybe. If you want to save time, then we can read in Hindi only. Okay. Then read purport in Hindi only. What's your opinion? My opinion is to follow your opinion. तात्पर्य पढ़ेंगे। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, जन्म तुनादि गृह में सुखम हि तुच्छम। पुरुष या स्त्री दोनों ही विषय भोग चाहते हैं, और जब वे विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो जाते हैं तो वे कुछ काल तक तो सुखी रहते हैं, किंतु अंततो गत्वा उनमें मतभेद आने लगता है और विवाह विच्छेद हो जाता है। यद्यपि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष संभोग के द्वारा जीवन भोगने के लिए इच्छुक हैं, किंतु परिणाम निकलता है कलह तथा दुख। विवाह की संस्कृति पुरुषों तथा स्त्रियों को सीमित यौन जीवन की छूट देने के लिए की जाती है। भगवद गीता में भी भगवान ने संस्कृति की है, धर्मामो भूतेषु कामोऽस्मि। जो विषयी जीवन धर्म विरुद्ध नहीं है, वह कृष्ण है। प्रत्येक जीव विषयी जीवन का भोग करने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु भौतिकतावादी जीवन खाने, सोने, मैथुन तथा भय में निहित है। पशु जीवन में खाने, सोने, मैथुन सुख तथा भय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किंतु मानव जीवन में इन सब को संयमित करना चाहिए। खाने की वैदिक योजना में कृष्ण को अर्पित भोजन या यज्ञ शिष्ट तथा प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। यज्ञ शिष्टा सदा संतो मुच्यन्ते सर्वपीडीषु। भगवान के भक्तों को सारे पापों से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन करते हैं। भगवद गीता 3:13। भौतिक जीवन में विशेषतया खाते समय मनुष्य पाप कर्म करता है, और पाप कर्म करने से मनुष्य को प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर दंड स्वरूप दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मैथुन तथा भोजन आवश्यक, इसलिए ये वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किए जाते हैं, जिससे लोग वैदिक आदेशों के अनुसार खा सकें, सो सकें, मैथुन कर सकें, भयावह जीवन से रक्षा पा सकें और क्रमशः ऊपर उठकर इस शरीर के दंड से मुक्त हो सकें।
इस प्रकार वैदिक आदेश विवाह के लिए मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें यह भाव निहित रहता है विवाह संस्कार से स्त्री तथा पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहयोग देंगे। दुर्भाग्यवश इस युग में विशेष रूप से स्त्री तथा पुरुष अनियंत्रित काम भोग से संयुक्त होते हैं। इस तरह वे दंडित होते हैं और उन्हें अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए पशु योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः वैदिक आदेश सावधान करते हैं, नायं देहो देहो भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजान। मनुष्य को सूकरों की तरह विषयी जीवन नहीं बिताना चाहिए और जो भी मिले यहाँ तक कि मल भी उसे खा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर अर्पित किया गया प्रसाद खाए और वैदिक आदेशों के अनुसार काम भोग करे। उसे कृष्ण भावना के काम में लगकर अपने आप को संसार की भयावह स्थिति से बचाना चाहिए और कठिन श्रम से उत्पन्न थकान को मिटाने के लिए ही सोना चाहिए। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि चूंकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, अतएव मैंने समस्त सकाम कर्मों से संन्यास ले लिया। Шрила Прабхупада ки джай. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Чакшурун Милитам Яната Смай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манохпиштам Стапитам Йена Бутале Свайрупа Кадама Рям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубешча Крипа Синубя Эвача Патитанам Паваны Бью Вайшнау Бью Наму Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хре Кришна 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here in this purport it is said how to become protected from fearful life. For that purpose one has to follow Vedic literature. So आज के इस श्लोक में तात्पर्य बताया गया है भयावह जीवन से कैसे बचा जाए, उसके लिए हमें वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए. We have particular lifestyle. And Srila Prabhupada once, he was asked by one journalist asked Srila Prabhupada, what if all these things that you are speaking about, Krishna consciousness and so on, what if it is just imaginary something? What if it doesn't exist? हम सब जो भी एक पालन करते हैं, डेली अपना रूटीन पालन करते हैं, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या होगा अगर अंत में पता लगे कि ये सब एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, तो आपको कैसा लगेगा? Kalpana, yeah? Kalpana. So, and Srila Prabhupada, he told that even if it is Kalpana, anyway, our lifestyle is the best. So, भले ये कल्पना है, प्रभुपाद जी ने कहा भले ये कल्पना है, लेकिन ये बेस्ट है. But actually, after some silence, he told, but actually it is not Kalpana. It is not Kalpana. So actually we have Vedic literature which is compared with mother, and by mercy of mother, child can know who is his or her father. So हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं ये माता की तरह हैं और माता से हमें पता लगता है कि हमारे पिता कौन हैं और हमें उनका नाम और उनके बारे में जानकारी मिलती है. And our Supreme Father is Supreme Lord Shri Krishna. और हमारे जो परम पिता हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण. You can write it in your notes. आप लोग अपने नोट्स में इस चीज को लिख लीजिए. Yeah, because he says Aham Bija Pradah Pita. It is confirmed by himself. He told that he is Supreme Father. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में इसको कंफर्म करते हैं अहम बीज प्रदा पिता, तो इसलिए हमें इसको याद कर लेना चाहिए.
So if we accept Vedic literature, who is mother, then we accept naturally, ultimately, we accept shelter of Supreme Lord, and he says, Sarva dharman parityaja, mamekam sharanam vraja, aham tvam sarva papebhyo, moksha shyami mashuchaha. It means don't be frightened, don't be fearful, and you just rely on me, and I will protect you from all sinful reactions. Don't be fearful. So it is life with Krishna. Life with Krishna is free from any kind of fear. तो अगर हम वैदिक शास्त्रों को माता की तरह स्वीकार कर रहे हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होना ही पड़ेगा एज अ पिता की तरह हमें शरणागत होना है। इसीलिए भगवद गीता में श्लोक आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, डर नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान को शरणागत होते हैं तो हमारे डर का विनाश हो जाना चाहिए, और भगवान को शरणागत होने से ही ये डर का विनाश हो सकता है। So in that sense, it is quite important to accept Vedic literature and to contact with this literature, with our Supreme Mother, Vedic literature, through process of Shravanam. Every day, Nitya Bhagavata Sevaya. Listen every day, read every day. It is important. तो हमें इसी, अगर हम वैदिक शास्त्रों को अपनी माता की तरह स्वीकार कर रहे हैं तो डेली हमें वैदिक शास्त्रों से सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। So in one of the purports to one of the verses from Nectar of Instruction, Srila Prabhupada writes that there are three kinds of intelligence. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत ग्रंथ में प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह पर कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है। And the first kind of intelligence, it means first class intelligence, is when one is able to take lessons not by having his own personal experience, his own mistakes, his own failures in life, but it is sufficient for him just to listen about someone's mistakes and to take these lessons. So, उसमें तीन श्रेणी की बुद्धि बताई गई, जिसमें सबसे पहली श्रेणी की बुद्धि बताई गई है कि जो सुन करके सीख जाए, ना कि खुद से जब एक्सपीरियंस करे, खुद से जब अनुभव करे, या फिर दूसरों के अनुभव को देखे, दूसरों के अनुभव करते हुए देखे तब सीखे। नहीं, वो सुन करके ही, दूसरे के अनुभव को सुन करके ही सीख जाता है। इसको प्रथम श्रेणी की बुद्धि बताई गई। And the second class intelligence is when one has to have his own personal experience, and only after this he is able to take some lessons and to improve his life. और दूसरे श्रेणी की बुद्धि बताई गई है कि वो खुद से करेगा, अनुभव लेगा, तभी सीखेगा, अन्यथा वो नहीं सीखेगा। तो ये दूसरी श्रेणी की बुद्धि बताई गई है। And the third class intelligence is when one commits the same mistakes again and again and takes no lessons, only sufferings, and he suffers without any, without any benefit for himself, because again he is not able to take any lessons. तीसरी श्रेणी की बुद्धि होती है जिसमें व्यक्ति बार बार गलती करता है, फिर भी नहीं सीखता है, और उसे दुख का सामना करना पड़ता है, और बार बार दुख झेलने के बाद भी वो नहीं सीख पाता है। So the conclusion is very simple: we need intelligence, otherwise we will be suffering. तो इसका जो निष्कर्ष है वो बहुत ही आसान है कि हमें ऐसी बुद्धि चाहिए जिससे हम इस दुख से बच सकें। And Krishna himself in Bhagavad Gita, he says where to get this intelligence which we so much need. He tells this in the verse 10.10, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अभी ऐसी प्रथम श्रेणी की बुद्धि प्राप्त कैसे करी जाए। तो वो हमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम्। So in this verse it is told, Krishna himself, he says that I give intelligence to those who follow two rules. They serve me, and they serve, rule number 1, they serve me with love and devotion, and the rule number 2, they serve me uninterruptedly, constantly. तो दो कंडीशन को अगर हम फुलफिल करते हैं तब भगवान हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसमें पहली कंडीशन है
कि क्या है पहली कंडीशन? जो प्रीतिपूर्वक विद लव एंड डिवोशन, प्रेम के साथ जो मेरा भजन करता है उसको मैं जो है प्रदान करता हूँ ऐसे गुरु। Yeah, and the second you also taught, right? About the second rule. Can you repeat? Yes, one should serve uninterruptedly or constantly. मतलब लगातार भक्ति जिसमें कोई रोक टोक ना हो, ऐसी भक्ति। Yeah, that's why our spiritual masters, they tell us, keep yourself busy in devotional service, right? इसीलिए हमारे गुरु हमें कहते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, हमेशा। So love and devotion and constant engagement in devotional service, and of course time, it takes time, and then we get the result. Even if we have low class intelligence, after some time we can surprisingly see that we have got a little bit more. So भले ही हमारी निम्न श्रेणी की बुद्धि हो, लेकिन जब हम इन दो नियमों का पालन करते हैं, पहला नियम प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को भजते हैं, साथ ही साथ जब हम अनइंटरप्टेड मतलब समय व्यर्थ किए बिना पूरे समय को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं पूर्ण तरीके से, तो इससे भगवान हमें वो प्रथम श्रेणी की बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। And this intelligence is extremely important, especially in brahmachari life, because brahmacharis, they are not supposed to go through personal experience of family life. They have to take the lessons by hearing, by shravanam. तो इसलिए ब्रह्मचारी जीवन में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के बाद व्यक्ति को सुन करके ही सीख लेना चाहिए, उसको पर्सनली जा करके एक्सपीरियंस करके सीखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, उसको सुन करके ही सीख लेना चाहिए। At least it is about those brahmacharis who want to remain brahmacharis for quite long time. और ये उन ब्रह्मचारियों के लिए जो लंबे समय तक ब्रह्मचारी बन के रहना चाहते हैं। So the same way as we accept descriptions of hellish planet or heavenly planets or whatever, or spiritual world, we just accept it. The same way, just accept the description of family life as it is from Srimad Bhagavatam. तो जैसे हम नरक लोकों का वर्णन देखते हैं, पढ़ते हैं, स्वीकार करते हैं श्रीमद् भागवतम से, उसी प्रकार हमें गृहस्थ आश्रम के बारे में जो सत्य बताया गया है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। Shri Shri Radha Madana Mohan Ki Jai, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Sudarshana Chakra Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna. Because you see here, this Brahmana who speaks in today's verse, this Brahmana, he takes the lesson just by observing. He is saying here in the verse. तो इस श्लोक में प्रमुख रूप से जो बताया जा रहा है, जो ब्राह्मण ने सीखा है, इस ब्राह्मण ने अनुभव से सीखा है, तो ब्राह्मण ने देख करके सुन करके ही सीख लिया है। Just observe lives of other people, just take lessons. Anyway, people, they are interested to know different stories about other people. That's why they are watching TV, internet, reading newspaper, and so on and so on. What this person did, what this pop singer did, what this sport star is doing, and so on and so on. But it is natural inclination to listen what other living entities are engaged in. But it makes sense if we are able to take lessons. तो सामान्य रूप से हम देखते हैं, लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, दूसरों के अनुभव को देखने के लिए, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, फिल्म स्टार के जीवन में क्या चल रहा है, क्रिकेटर के जीवन में क्या चल रहा है, सेलिब्रिटी के जीवन में क्या चल रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो उनके अनुभव से सीख लेता है और उसको दोहराता नहीं। इसको प्रथम श्रेणी की बुद्धि बताया गया। So here, this Brahmana, he observes that men and women, they are hankering for sensual pleasure of sex, but ultimately none of them are happy. So ये ब्राह्मण जो है यहाँ पर अपना अनुभव बता रहे हैं, जो देखा है उन्होंने,
कि पुरुष और स्त्री दोनों मैथुन सुख के लिए आपस में आते हैं, लेकिन उनको उससे भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। And while observing this, one should be a little bit humble. Means he should not think that my situation will be another, I will be having another destiny. It doesn't work in lives of other people, but it will work in my life. तो हमें इसको बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है दूसरे के जीवन में अच्छा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इस जीवन में जाऊंगा तो मुझे तो अच्छा अनुभव मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है वास्तविकता। No, there are some laws of life and one cannot avoid these laws. It works for everyone. We're not something special. When one is not humble enough, he thinks about himself that he is special. तो ये प्रकृति के नियम है जो कि सबके ऊपर समान रूप से कार्य करते हैं, समान रूप से, बराबर रूप से कार्य करते हैं, और इसके लिए इसको स्वीकार करने के लिए हमें बहुत ही विनम्र होना पड़ेगा, तभी हम इन प्रकृति के नियमों को अपने जीवन में भी स्वीकार कर पाएंगे और ये नहीं समझेंगे कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। So you see, there are at least two approaches to this life. One approach is a gross materialistic approach, is that I have some material desires and I will try my best. I will put all my endeavors to fulfill these desires because it is the most important. So the main point is just I have desires and that is important and I will be trying to achieve it. तो इस भौतिकतावादी जीवन को जीने के दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं। इसमें से पहला मार्ग होता है जो पूर्ण रूप से भौतिकतावादी लोग जीने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होना और उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना और यही समझना कि मैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करके ही जीवन में प्रसन्न रह सकता हूँ, इसको कहते हैं भौतिकतावादी प्रयास। So this approach is similar to the actions of a driver who is sitting in the car, but he doesn't know the rules, how he should drive on this road. He has just a goal that I have to reach particular point B, but I don't know the rules, I don't know the laws, how it's working. ये उसी प्रकार से हो गया, ये जो भौतिकतावादी जो एक तरीका है, विचारधारा है, उसी प्रकार से हो गया जैसे एक ड्राइवर कार में बैठा है, उसको ये पता है कि उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन उसे गाड़ी चलाने की कोई भी नियम नहीं पता है, बस वो गाड़ी चलाया जा रहा है। So basically, it is quite guaranteed that this driver will have some adventures in nearest future. तो इसमें ये बिल्कुल तय है कि ये जो ड्राइवर है जिसे नियम ना पता है ना वो जानता है, तो इस ड्राइवर को आगे चल के बहुत ही खतरनाक अनुभव होने वाले हैं। Adventures are waiting for him. Darshan of policemen is waiting for him also, and so on. तो उसको ऐसे बहुत ही खतरनाक अनुभव होने वाले हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे हैं और उसको ये नहीं पता रहता है। And another approach, which is more philosophical, is actually what I can expect from this life. What I can expect. तो एक दूसरा भी तरीका है इस जीवन को जीने का, जो कि है कि मैं इस जीवन से क्या चाहता हूँ। Because you see, we come in this world just for a short period of time, just few decades. It is the duration of human form of life. Of course, we had lives before, but we don't remember these lives. So anyway, we deal with this particular lifetime, and this time is quite short. So we came, then we go, and this particular planet and this particular material universe, it was existing without us and it will be existing after us. So the question is just, we came in these particular circumstances, and what we can expect in these particular circumstances, it is what should be known, what should be studied. तो मनुष्य जीवन जो है ये बहुत ही छोटा होता है, हम कुछ दशकों के लिए आए हैं, कुछ दशकों तक ही हमारा मनुष्य जीवन रहता है और हमारे आने के पहले भी भौतिक जगत था, हमारे जाने के बाद भी ये संसार रहेगा। तो इस छोटे से जीवन काल में हम कैसे जीवन की सिद्धि को प्राप्त करें, इसको जानने में हमारा महत्वपूर्ण विचारधारा होनी चाहिए। हमें इस चीज को सोचने पर हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए।
So it is nice approach not to be just overwhelmed by some desires, plans, big plans, and trying to achieve it without paying attention on anything. It is much more better just to, first of all, to observe life as it is and to analyze how it works and what I can expect from this life. तो हमें केवल मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं बिता देना चाहिए. हमें इस मनुष्य जीवन को देखना चाहिए कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके, किन सिद्धांतों को हम जीवन में अपनाएं जिससे जीवन और बेहतर बन सकता है, उसको अपना करके हमें अपने जीवन को जीना चाहिए. So here in this purport and in this verse, it is said that these relationships between men and women based on sexual life mainly is not the source of their satisfaction. तो इसमें बताया गया है इस श्लोक में भी कि पुरुष और स्त्री का जो संयोग होता है मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु वास्तविक अनुभव तो यही देखा गया है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं. Different conceptions of happiness are described in Bhagavad Gita. Happiness in Sattva gun, in Raja gun, in Tama gun. भगवद गीता में ये सुख प्राप्त करने के कई सारे विभाग बताए गए हैं. इसमें से आता है सतोगुण में कैसे सुख हो, रजोगुण में कैसे सुख हो, तमोगुण में कैसे सुख हो. And happiness in mode of passion or in Raja gun is such that I have my senses and there are some sense objects and my happiness is just to connect these two. तो रजोगुणी सुख जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तभी जो सुख मिलता है वही सुख असली सुख है. ये रजोगुणी सुख कहलाता है. Different kinds of this connection to see what I like to see means I use my vision, my power to see what I prefer, what is according to my choice. Yeah, to my choice, or I want to hear particular sounds or music or whatever, or I prefer to take particular type of food. And this happiness, this materialistic happiness which is mentioned in today's verse, it is connection with the body of a representative of the opposite sex through working senses that are named genitals. It is also the same conception. There is object, sense object, and there are my senses, and I want to connect it, and that's all. Just connect and be happy. Connect and be happy. तो इसी रजोगुणी सुख के बारे में इस आज के श्लोक में बताया है कैसे इंद्रिय भोग की वस्तुएं और इंद्रियां जब ये दोनों मिलती हैं तो कैसे सुख मिलता है जीवात्मा को. उस सुख के बारे में आज के श्लोक में बताया गया है. स्त्री और पुरुष का जो संयोग है मैथुन सुख, इसी को आज के श्लोक में बताया गया है जो कि भगवद गीता में रजोगुणी सुख से प्रदर्शित किया जाता है. But these sense objects are material sense objects, and matter cannot give us eternal happiness. That is big secret for many people who are hankering for material happiness and who cannot achieve it. That's why we cannot achieve it. It is not achievable. It is chapala sukha, it is flickering happiness. Sometimes one is able to feel something nice, but it is just for short period of time. लेकिन इस सुख को शास्त्रों में चपल सुख बताया गया है क्योंकि ये भौतिक जीवन से सुख मिलने वाला है और भौतिक जीवन जो भी होता है वो नश्वर है, जो कि जिसका अंत होता है कुछ समय में, जिसका विनाश हो जाएगा. तो इससे मिलने वाला जो ये सुख होता है वो भी विनाश करने वाला होता है, वो भी एक समय में उसका अंत होने वाला होता है. इसलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए. It is like, for example, you go to Govinda's restaurant, and in this Govinda's restaurant different dishes are available, and at least in east of Kailash temple the system is that you can approach this how do we call it, this metallic bowls, metallic bowls, and you can just take whatever you like. So what approach we suggest to follow is that we can just observe how other people behave and what dishes they prefer. We should not how to say
just rush and take any dish without discrimination. We can just observe how people they behave, what they take, what they avoid, and just by observing their preferences, it also gives us some idea of what is this life about. Yes. बहुत अच्छा बता रहे हैं कि एक अप्रोच होती है, जो एक तरीका होता है भौतिक जीवन को जीने का, वो ये भी होता है जैसे हम गोविंदा में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे बॉल्स रखे रहते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे रहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि बस जाओ और जो दिख रहा है उसको प्लेट में लेकर के खाना शुरू कर दो। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि हम दूसरों के अनुभव से देखें कि कौन सी डिश अवॉइड करेंगे, कौन सी डिश को मना किया गया ये अच्छी नहीं, इसको मत खाओ, कौन सी डिश ज़्यादा लोग खा रहे हैं तो उसको खाया जाए। तो हमें दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है मनुष्य जीवन बहुत ही छोटा है और नश्वर है, तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस से, दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। So again, according to this analogy of Govinda's restaurant, we can see that there is a huge group of people who are trying to take particular dish from particular bowl, but no one from them is satisfied. This dish, this food is not tasty, but anyway, there is some force which forces them to take this particular rotten rice or rice with sand or whatever. You can take any analogy which you like. तो यहाँ पर गोविंदा रेस्टोरेंट की ये जो एनालॉजी है इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे बहुत सारे व्यंजन रखे हुए हैं, लेकिन एक व्यंजन के पीछे पूरी भीड़ भाग रही है, और वो जो व्यंजन है वो ऐसा चावल है जिसमें बालू मिली हुई है, लेकिन सब जनता उसी को खाना चाहती है। तो उसके बारे में, उस सुख के बारे में आज के इस तात्पर्य में बताया गया। So Arjuna asks Krishna, what is the name of this force, of this power that forces me to do something which I understand that it is not beneficial for me, but anyway I am forced by something. What is? ऐसा कौन सा बल है जो कि सबको उसी चावल को खाने पर मजबूर कर रहा है जिसमें बालू मिली हुई है? तो अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा बल है जो जीवात्मा को ना चाहते हुए भी गलत कार्यों को करने में फोर्स करता है, खींचता है और लगाता है। सोने वाले जाग जाइए, ऐसा कौन सा बल है जो कि उनको बलपूर्वक धकेलता है गलत कार्य को करने में? And Krishna answers, it is kama only, it is lust only, which is burns like fire and which is eternal enemy of conditioned living entity. तो भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, ये बल है काम। काम एक ऐसा बल है जो कि कभी भी बुझने वाला नहीं है, जो कि बहुत ही बलपूर्वक और जीवात्मा को खींचता रहता है। So basically, if we are speaking it works, तो दिलाता ही है, साथ ही साथ हमारे अंदर जो काम वासना है इसको भी शांत करता है, और हमारे जो संस्कार हैं उन सबको भी शुद्ध करता है। The more samskaras one has, I mean materialistic samskaras, these samskaras with about materialistic tastes, the less intelligence one has, the less ability to take lessons from someone's experience, not from his own personal experience, but from someone's experience, the less ability one has if one has a lot of these samskaras about how to enjoy his senses. तो जितने ज्यादा हमारे अंदर गलत संस्कार होंगे, वस्तुओं को भोगने के गलत संस्कार होंगे, उतना ज्यादा हम दूसरों के अनुभव से सीख पाने में असमर्थ रहेंगे। हम दूसरों के अनुभव से नहीं सीख पाएंगे जितने ज्यादा हमारे अंदर गलत विषय भोग के संस्कार होंगे। So what one can do in this situation, if he feels or she feels that he or she is lacking intelligence which is needed for spiritual life, first of all one should restrict some activities that increase this karma or lust. Like for example, we put fuel in the fire, and because of that fire becomes, how to say, bigger, right? Bigger. तो इसलिए हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो कि हमारे संस्कारों को चलाती हैं, संस्कारों को चलाती हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि कैसे आग में डीजल डालने से कैसे आग और बढ़ती है, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि वो डीजल क्या है जो हमारे साथ को चलाता है।
It means that, for example, if one desires to give up intoxications, he should avoid company of his ex-friends, drunkards and drug takers. He has to do it. If one wants to get free from tendency to illicit sex, he should not watch particular videos in internet. तो अब हम बात करें अगर आदतों के बारे में, तो अगर किसी को आदत थी शराब पीने की, नशा करने की, तो अब उसे उन मित्रों से, उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि उसे ये सब कार्य करने पर प्रेरित करते हैं। और बात रही अवैध संग की, अवैध स्त्री संग, अवैध संग, तो उसको अगर हमें अब अपने जीवन से निकालना है, संस्कारों को निकालना है, तो हमें उन चीजों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा जो हमें वो प्रेरित करती हैं, फिर से उत्तेजित करती हैं उन चीजों से, जैसे इंटरनेट पर जाना, वीडियो देखना, हमें उससे अपने आप को बचाना चाहिए। And avoiding watching these particular videos or avoiding undesirable association, it is actually our Sharanagati in action. It is our surrender to Krishna in action. तो शरणागति की हम बात करते हैं, शरणागति को कार्यकलाप में कैसे लाया जाए, कैसे एक्शन में लाया जाए, उसी का ये एक तरीका है कि हमें जो चीजें हमारे नियमों को पालन करने में रोकती हैं, बाधा आती हैं, उन नियमों को पालन करने से हमें रोकती हैं, उन चीजों को ही अवॉइड करना, उन चीजों को अपने जीवन से निकाल देना, इसी को कहते हैं शरणागति, एक प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारना। Because again, there are six aspects of Sharanagati, and the first two aspects of Sharanagati are Anukulyasya Sankalpah, Pratikulyasya Varjanam, which means accept what is favorable for devotional service and reject what is unfavorable for devotional service. तो शरणागति की जब हम बात करें तो 6 अंग होते हैं शरणागति के, जिसमें पहले 2 अंग होते हैं जिसमें बताया गया अनुकूलस्य संकल्प, जो कि हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और दूसरा बताया गया जो भी हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्याग देना। There are 6 aspects of Sharanagati. We are practicing Vaidhi Sadhana Bhakti, it is regulated practice of devotional service, and for us these first 2 aspects are relevant. Other aspects are not so much relevant, but these first 2 aspects are relevant for us. तो क्योंकि हम वैदिक साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, इसलिए शरणागति के इन 6 अंगों में से जो पहले 2 अंग हैं वो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकि हम अपने जीवन में वैदिक साधना भक्ति का पालन अच्छे से कर सकें। So, if to speak about secrets of success in spiritual life, one of the secrets is to be strict in these first 2 aspects of Sharanagati. तो यही है एक रहस्य भक्ति में आगे बढ़ने का, और वो रहस्य है शरणागति के इन 2 अंगों का कठोरता से पालन करना। Like Jayadvaita Maharaj, he told once that by this moment, no one left his body just by strictly following spiritual standards. No one. जयद्वैत स्वामी महाराज ने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है अभी तक जो भक्ति के कठोर नियमों का पालन करते हुए जिसने अभी तक शरीर छोड़ा हो। So you will lose nothing. You will lose nothing if you will be trying to follow all these things strictly. You will only gain. अच्छा, मैं करेक्ट करूँगा। जयद्वैत स्वामी महाराज ने कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस भक्ति के नियमों का पालन करने से जिसको कोई नुकसान हुआ हो। हमें भी कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर हम भक्ति के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। Okay. So again, in this purport it is written that just by following Vedic restrictions, it is the end of purport. I will read from here. He can save himself from the fearful condition of material existence by following Vedas. कृष्ण भावनामृत में लगकर और वैदिक आदेशों का पालन करने से व्यक्ति इस भयावह स्थिति से बच सकता है। प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं, तात्पर्य बता रहे हैं। So basically, this materialistic life is what about? It is about eternal, permanent, lasting, for hankering for material desires, for fulfilling material desires. One is hankering to fulfill these desires, and simultaneously he is always anxious and fearful, and never satisfied.
never जो satisfied. भौतिकतावादी इच्छाओं को पूर्ण करने में जो भी जीवात्मा लगती है, उसके जीवन में हमेशा भय रहता है, दुख रहता है, और उसकी इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती. Never satisfied because this happiness is flickering. It is chapala sukha. और क्यों ये इच्छाएं संतुष्ट नहीं हो सकती हैं? क्योंकि इस भौतिक जीवन का जो सुख है वो चपल सुख है, जो कि परमानेंट नहीं है. So people, they are trying to catch this bird of happiness. Bird of happiness. तो सब भौतिकतावादी जीवन में सब इस खुशी रूपी चिड़िया को पकड़ने के प्रयास में लगे हुए, जो किसी की पकड़ में नहीं आ रही. It is one Russian song about bird of happiness which flew away from me, but anyway I have a hope that tomorrow this bird will fly back and I will catch it. Yeah. तो रशियन में एक सॉन्ग है, वो भी गा के सुना रहे हैं इंग्लिश में. रशियन सॉन्ग यू आर सिंगिंग इन इंग्लिश. रशियन सॉन्ग यू आर सिंगिंग इन इंग्लिश. I'm not going to sing this song. We are on Bhagavatam class. We are not going to sing these songs. रशिया में एक सॉन्ग है कि एक गीत है कि सुख रूपी चिड़िया उड़ती जा रही है, मेरे से दूर जाती जा रही है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं इस चिड़िया को पकड़ पाऊंगा, एक दिन आएगा जब मैं सुख को प्राप्त कर पाऊंगा. And the refrain of this song is, tomorrow will be better than yesterday. और इसके बाद रिपीट होती है, वो ये होती है कि कल जो है वो आने वाला कल पिछले कल से अच्छा होगा. इस आशा में चिड़िया को पकड़ने में लगे रहो. Such optimistic song ये बहुत ही आशावादी गीत है for ignorant people. अज्ञानता रूपी अंधकार में डूबे हुए लोगों के लिए ये बहुत ही आशा देने वाला गीत. So you see these love songs, pop songs, love songs, they are divided in two categories. The first category, I'm hankering to have relationships with you, I want to meet you and so on. And the second category of the same love songs is get out from my life. तो रोमांटिक सॉन्ग की दो कैटेगरी बता रहे हैं यहाँ पर. पहला तो ये होता है कि मैं तुमको प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम मुझे मिल जाओ. और दूसरा कैटेगरी ये होता है कि तुम मुझसे मेरे से दूर चले जाओ और मेरे को छोड़ दो. ये दो कैटेगरी बताई. It is exactly how materialistic mind works. Sankalpa vikalpa. I accept what I want, then I reject. And because matter doesn't give us eternal happiness, so the same person is rejected. तो भौतिकतावादी मानसिकता के यही दो कार्य हैं, संकल्प और विकल्प. संकल्प मतलब जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, और विकल्प क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा इसलिए मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, कुछ और स्वीकार करना चाहता हूँ. And there is such mythology. I don't know about Indian culture, but in Western culture there is such idea or such mythology that one has to find the representative of the opposite sex, and he is, for him or for her, is like the second part, means part of himself, means he is not complete by himself. Better half. You have this idea also, right? Better half. Okay, so they are searching for this better half, and means I myself, I'm not complete without this person. I have to find someone, I have to find this better half, and then happiness is guaranteed. Hare Krishna. भौतिकतावादी जीवन का ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि बेटर हाफ के बिना हमारा जीवन अपूर्ण रहता है. बेटर हाफ आप लोग समझ गए होंगे, अर्धांगिनी या फिर अर्धपुरुष. तो इनके बिना हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है. अगर ये नहीं तो हमारा जीवन पूरा नहीं हो सकता है. ये एक विचारधारा होती है भौतिकतावादी जीवन. But this material world is full of people who are envious, egoistic, and lusty and greedy. भौतिकतावादी जो संसार है वो उन लोगों से भरा हुआ है जो कि ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, चिढ़ते हैं. ऐसे लोगों से भौतिकतावादी जीवन भरा हुआ है. This mundane culture forces one to idealize the representative of the opposite sex. But each and every representative of the opposite sex also has kama, krodha, lobha, mada, matsarya, moha in his or in her heart. We should be realistic about this, what we are going to deal with. तो हम इस भौतिकतावादी जीवन में देखते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद,
मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तो अगर हम उनको अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं तो हमें उनके भी इस काम क्रोध लोभ और इन सारे चीजों से हमें भी डील करना पड़ेगा। That's why by establishing ISKCON, Srila Prabhupada also introduces this system of Grihastha Ashrama, where she and he, they are united not on the basis of satisfying senses of each other, but they are just trying to serve Krishna together and helping each other in this service. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो गृहस्थ आश्रम व्यवस्थित किया ISKCON संस्था में, तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया कि लड़का और लड़की, प्रभु जी और माता जी दोनों कैसे मिल करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे और दोनों कैसे एक दूसरे को सहयोग करें भगवान की सेवा में अच्छे से लगे। But still, one wants to feel himself complete and satisfied. And now we are going to read you one verse which gives the answer how one can achieve his own completeness. तो जैसा कि एक विचारधारा है भौतिकतावादी जीवन की कि अगर हमें पूर्ण होना है, कंप्लीट होना है और संतुष्ट होना है, तो उसके लिए एक बेटर हाफ की आवश्यकता होती है। लेकिन भागवत में और हमारे शास्त्रों में और भी एक श्लोक बताया गया है कि कैसे अकेले रहकर के भी संतुष्ट रहा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है और पूर्ण रहा जा सकता है। And this completeness is possible in Krishna consciousness only. और ये जो पूर्णता है, इसको केवल और केवल कृष्ण भावामृत के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है। Om Purnam Adach Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. It is from Shri Upanishad. It is very beginning of Shri Upanishad. ईशोपनिषद का पहला श्लोक प्रभु जी बता रहे हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. So you have this on your mobile, or you will translate verse just by hearing. I look at it. Okay. Then it is so-called invocation, or how do we call it? Okay, I'll read the English translation. The personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because He is the complete whole. Even though so many complete units emanates from Him, He remains the complete balance. Okay, are you ready? Yeah. Okay, good. तो श्लोक संख्या 1 ओम पूर्णमदः इस श्लोक में बताया गया है। इस मंत्र नंबर 2. इसे स्तुति। भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण हैं, अतः उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण हैं, अतः उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। So He is complete in Himself, and the same way what He creates also complete in itself. For example, so many universes comes from Garbhodakashaya Vishnu's body. So, and each universe, it is like system which is sustainable in itself, and everything works perfectly inside each and every universe by Krishna's mercy, of course. भगवान परिपूर्ण है और भगवान से जो भी चीज निकलती है वो भी परिपूर्ण होती है। जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु से इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, लेकिन सारे ब्रह्मांड अपने आप में परिपूर्ण हैं। सब खुद से अच्छे से फंक्शन करते हैं, अपने सारी वस्तुएं खुद से अच्छे से हो रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान और भगवान से निकले हुए जितने भी वस्तुएं हैं वो सब पूर्ण हैं। So this verse is about completeness and perfection of three, of Supreme Lord, of universes that comes from His body, and of ordinary living being, conditioned living being. And Supreme Lord is complete and perfect by Himself. Universes are also complete and perfect, but we as living beings, we have to follow some conditions in order to manifest this completeness and perfection. तो इस श्लोक में 3 प्रकार की पूर्णता के बारे में बताया गया है। एक पूर्णता तो भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं परिपूर्ण है,
दूसरा, जो भगवान से क्रिएशन निकला है, जो ब्रह्मांड निकले हैं, वो भी परिपूर्ण है क्योंकि वो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। तीसरा है जीवात्माएं। तो जीवात्मा जो है वो कंडीशन है, उसके ऊपर कुछ बद्ध है, जीवात्मा बद्ध है, तो उस बद्ध जीवात्मा को पूर्ण होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे वो भी पूर्ण हो सकती है। The life of conditioned living entity can become perfect and complete if this living entity, serves the Supreme Lord who is perfect and complete. तो बद्ध जीवात्मा तभी परिपूर्ण हो सकती है, तभी कंप्लीट हो सकती है, जब वो भगवान के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करके भगवान की सेवा करती है, तब वो जीवात्मा भी बद्ध जीवन से निकल के परिपूर्ण हो जाती है। So a very nice example is given in this purport. I'm about to finish the class, don't worry. The hand of a body is a complete unit only as long as it is attached to the complete body. It is about the end of purport, but actually it is quite easy to translate by hearing. I will repeat again. The hand of a body is a complete unit only as long as it is attached to the complete body. तो छोटी पूर्ण इकाई जो होती है वो पूरे शरीर को तभी संतुष्ट कर सकती है जब वो शरीर से जुड़ी रहे। When the hand is severed from the body, it may appear like a hand, but it is actually has none of the potencies of a hand. तो हाथ जो है हमारा अगर शरीर से निकल जाता है, भले ही वो हाथ जैसा दिखता है, लेकिन वो हाथ जैसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वो शरीर से अलग हो चुका है। Similarly, living beings are part and parcel of the complete whole, and if they are severed from the complete whole, the illusory representation of completeness cannot fully satisfy them. तो इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। Conditioned living entities are severed from Krishna, and they are trying to deal with this illusory representation of completeness by searching better half. तो इसी प्रकार से भौतिक जीवन में भगवान से अलग होकर के जीवात्मा सुख भोगना चाहता है, और इस समाज में पूर्णता ढूंढने के चक्कर में बेटर हाफ ढूंढता है, और कैसे उस पूर्णता को प्राप्त न करके वो फिर दुख को जीवन में We should just accept Krishna as our master and well-wisher and serve him, and in such way we will be feeling ourselves perfect and well, it is not the goal to feel ourselves perfect, but anyway, our life will be complete and perfect. तो हमारा जीवन भी परिपूर्ण और संतुष्ट तभी होगा जब भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को जोड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वा स्वीकार करेंगे, अपना मास्टर स्वीकार करेंगे, अपना शुभ चिंतक स्वीकार करेंगे, तभी हमारे जीवन में भी शांति और परिपूर्णता आएगी। Sankirtana devotees, they are trying to give this knowledge to everyone by distributing Srila Prabhupada's books. संकीर्तन भक्त जो होते हैं वो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को लोगों को दे करके लोगों को ये ज्ञान बांटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। Book distribution ki jai. बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। Okay, do you have some questions? कोई प्रश्न है किसी का? Yeah. प्रभु जी का प्रश्न। Okay. So what is the prashna? He will get another mic. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay. Yeah, Hare Krishna. Ah? Oh, Hare Krishna. Okay. Uh-huh. So what is the question? Okay, what is Hare Krishna? Haribo. What's going on? How I'm going to give the answer on the question if it doesn't work? Haribo. What to do?
Sir, please help me. Hare Krishna. What to do? I don't know. Sir, Haribol. It is broken already, right? I just did like this and it became broken, right? No problem. No? Let me explain you the question. Yeah. But how I will give the answer? That's the question. Hare Krishna. Oh, wait, this mic is needed for broadcasting. Yeah. This one. उस माइक को लगा है. Wait. Why? Mysterious microphone, right? Sometimes it works, sometimes it doesn't. Okay, give it here. Okay. Don't worry, I can do it myself. So, what is the question? Question is Prabhuji regarding Prahlad Maharaj and Narsimhadev pastime. So, is there any description of Holika? Of what? Holika. You heard about Holika? Yeah, I've heard. Maybe there is such description, but I've never seen this description. But what is the relation between Holika and Prahlada Maharaj and this story? I don't understand the question. Is there any description in the scriptures? Or if there is a description, then why, if Holika has a boon that she will not burn when she will sit in the fire, then how she was burned after having the benediction? Oh, I've never seen this story in Srila Prabhupada's books. Mainly I read Srila Prabhupada's books, if to speak about Vedic literature and the Indian culture. So I don't know. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी ने प्रभुपाद जी की पुस्तकों में तो ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं सुना है, होलिका का वर्णन भी नहीं सुना है, और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं प्रभु जी, और रशिया में तो ऐसा कहीं वर्णन आता नहीं है, तो ऐसा प्रभु जी ने सुना है. नहीं सुना है. Okay, so some more questions. कोई और प्रश्न है? Okay. Hare Krishna. I have a question that I want to understand it deeply. That why do we came in this world? The question is why we're here in this world. Yes. Oh, because we wanted to become separate from, not separate from Krishna, independent from Krishna. Like we celebrated this Independence Day recently. Yeah. So it is natural desire to be independent. Arindaksh Madhav Prabhu, is there a need to translate what we are speaking about or not? Then you translate, please. तो प्रभु का प्रश्न है कि हम इस भौतिक जीवन में आए ही क्यों? ये प्रश्न है, हम इस जीवन में आए ही क्यों? तो उस प्रश्न का प्रभु उत्तर दे रहे हैं क्योंकि the answer is okay. Repeat your question. Why we came in this world? Because we desired to be independent from Krishna, and this desire to be independent is natural. Like for example, recently we celebrated Independence Day. कुछ दिन पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो क्योंकि ये नेचर है जीवात्मा का स्वतंत्र रहना, और इसी स्वतंत्रता को मनाने के कारण, भगवान से स्वतंत्र रहने के कारण हम इस भौतिक जगत में आए हैं. And people, they can tell each other Happy Independence Day and so on, but it is quite funny because there is no happiness in independence. और लोग एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहकर बोल रहे थे उस दिन, लेकिन स्वतंत्र रहने में कोई भी खुशी नहीं है. We depend on Krishna. We should be conscious of this, and we should follow just all these instructions given by Srila Prabhupada, by spiritual master, and in such way we should revive these relationships, and it will make us satisfied. तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के ही अनुगत हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, और जब ये भाव जीवात्मा के अंदर आ जाता है, गुरु और कृष्ण की कृपा से जब हम ये सीख जाते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं है, बल्कि हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही अनुगत रह करके, शरणागत होकर के रह सकते हैं, तभी हमें जीवन में असली खुशी प्राप्त होगी. According to Srimad Bhagavatam, there are two goals of our being in material world. The first one is to become free from the desire desire to get material happiness, just by understanding that it is not achievable.
And the second goal is to develop Krishna consciousness and to come back to spiritual abode. तो पहला श्रीमद् भागवत में बताया गया इस भौतिक जगत में आने के दो लक्ष्य हैं। एक तो ये समझ जाना कि हम भगवान से स्वतंत्र रह के खुश नहीं रह सकते, और दूसरा ये जान जाना कि अब इस जीवन में जो मिला है इसकी पूर्णता यही है कि हमें इस जीवन को भगवान के साथ जोड़ने में लगाना है और भगवान के साथ संबंध स्थापित करके भगवान के पास वापस आना है। It is exactly what material world is created for. और इसीलिए ये भौतिक जगत बनाया गया है। It is like, for example, you go to school, you take lessons, and there is some educational program, and some results are expected after you took some training or course, and so on and so on. So the same way, there are particular goals. These two goals of one's being living in material world. तो जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ शिक्षा पूरी करके ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। स्कूल जाने का लक्ष्य ये नहीं होता है स्कूल में भी रहना पूरे जीवन। इसी प्रकार से भौतिक जीवन में जब हम आते हैं तो यहाँ का भी लक्ष्य होता है यहाँ से जल्दी से अपना कार्य पूरा करके ग्रेजुएट हो जाना और भगवान के धाम वापस आना। Okay, Hare Krishna. Do we have some questions and some time for these questions? Yeah. So some confidence more. Okay. That we were living with Krishna for so long time. But so suddenly, why this independent mentality comes, and why do we want to enjoy independently than Krishna? Why we want to enjoy independently? Because in spiritual world there is no such experience to enjoy independently. So this desire or this curiosity takes place. Let me try to be independent. And Krishna, he tries to convince us, don't go there, don't go to material world. But Srila Prabhupada, he gives something happens with sound, right? But Srila Prabhupada, he says that actually we have forced Krishna to put us here. It is not that out of his dislike he thrown us here. We forced him to put us here. तो प्रश्न था कि जब हम भगवान के साथी थे तो हमारे अंदर एक इच्छा कहाँ से आई स्वतंत्र रहने की। तो प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो इच्छा आई ये इस इच्छा से हमने भगवान को फोर्स किया। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं हमने अपनी इच्छा से फोर्स किया भगवान को, जिसके कारण हम यहाँ पर आए। And if we understand that actually we forced Krishna to put us here, it makes us responsible for our life, for our spiritual life, for our life in general. And it is nice, because otherwise if we just accidentally we are here, then what is the question of our responsibility or of our endeavors in spiritual life? Hare Krishna. Hare Krishna. Madhava Murari Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad